Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Right. I hope सबका वीकेंड अच्छा रहा होगा और उस अच्छे वीकेंड में असाइनमेंट भी किए होंगे कंप्लीट। आई एम अज्यूमिंग किसके किसके असाइनमेंट हो गए? रेज हैंड्स। ओके ग्रेट। हाथ ऊपर ही रखना है, जस्ट कॉल वन बाय वन। इसका भी हो गया है। I haven't completed the whole website but done partially. वो भी वेबसाइट हुई एंड ऑल्सो द रिसर्च वाला पार्ट जहाँ मैंने बोला था क्वेश्चंस फॉर्म करके एक गूगल फॉर्म बनाना है और उसमें रिप्लाईज लेना है। सो जिसने भी किया है raise your hands. I'll just call out the names or one by one share your screen. Okay, and you can go through that. So, जिसने अगर वेबसाइट कंप्लीट की हो वो भी रेज योर हैंड्स, जिसने रिसर्च वाला पार्ट किया वो भी। विल सी बोथ द थिंग्स। सो आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है? यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट द स्क्रीन एंड बस आई अंडरस्टैंड। तो उसमें जो भी होगा आई पॉइंट इट आउट, या मेरे को क्वेश्चन होगा सो आई ओनली से अगर उसमें कुछ है। So you guys don't have to explain anything. Just share your screens and start presenting. Okay. So we'll start with Rohan first. All right, sir. I'll share my screen. Sure. Do let me know if you can see my screen. Yes, it's visible. So first, do you want to see the form or the inputs? Anything is fine. Or the website itself? So if you see the First, form, see the questions. okay. So these were the questions around. Okay. Okay. What is ethnicity? Ethnicity, as in if you are a Maharashtrian or Marwari or something like that. So what I wanted to. Scroll. Okay. Yes. Yes. Okay. You can scroll. Okay. 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 Okay, cool. Let's quickly see the responses. Overall responses. So overall responses were 63 responses. These were Skip, the emails. demographics. We can go to the age directly. Okay. Age was State. this. State. Okay. Okay. Response. Okay. Cool. All right. Okay. So here, a takeaway that since we are building it for India, there's no need to ask, the current country of residence. City is fine, but country is not needed. That's an additional. I actually broadened a little bit more and I sent it to my friends internationally as well. So that's something I just did. But here we don't need that, no? Because sure. For the 58 of the users, it's an additional step. Sure, sir. Right? Yeah. Okay, scroll. Okay, Assamese, Bengali.
Okay, nationality is fine. ये भी नहीं चाहिए था nationality. We could have ignored it. All right, sir. ईमेल किया था तो फिर मोबाइल की भी जरूरत नहीं थी. That's okay. ठीक है Occupation sir. is fine. Just stay. Yeah. 55% is salary, right? 55.4% are salaried professionals, sir. Okay. Okay. 9.2% are That's others, right. 23% students. Household service 80% yes. Okay. Daily. Okay. Fine. With professional work. Okay. So cleaning, deep cleaning, clinical festival. Okay. Semester, semester, cooking. Okay. General. All right. Cool. Scroll. Yeah. All right. So 27.4 is 500 to 1000 and 1000 to 2000, right? 3,000. Yes, sir. 3000. Then 27.4 are also like clashing. This is basically clashing. Uh, Equal shares for 1,000 to 2,000 and 2,000 to 3,000. That depends on city to city. Yeah. Then some custom questions, those answers. Okay. Uh, Yes. Monetary small. Yeah. All right. Cool. Personal size. We must have. Okay. Okay. Scroll. If you and yes and sounds. Hmm. I Okay. actually found a lot of in this question, a lot of people have answered in a way that gives Yes. me some personal insights on how they would want the app. Yeah. Ratings, time feedback, neatness, cleaners. Yeah. All right. Cool. Mm, okay. All right. Scroll. Tracking sounds very. Yeah. Scroll. Mm, all right. Cool. Perfect. We can go through the website. This is good. Alright. This is good stuff. Can go through So the website. websites are, as I showed you last time, I had done till here, right? Till here I had done. After that I did Okay. here. चलो ठीक है done. So these are all handmade from like components and stuff. I used a few components here, used variants for components, then That's the fine. button, then वो the card. जितना आप अपने हिसाब से फिग्मा यूज करके एक्सप्लोर कर सकते हो nothing like it. It's fine. It's going to be easier for you. So that's Yes, sir. completely fine. ठीक है. This is also good. Good work. All right. Good work, Rohan. Uh, Yeah. just ज्यादा एडिशनल चीजें ना लें तो बेटर है. पर्सनल चीजें जैसे फोन नंबर हो गया, यू डोंट नीड इट. नेशनलिटी यू डोंट नीड इट. सो लुकिंग एट द स्कोप, मेक श्योर कि कौन से क्वेश्चंस लेने कौन से नहीं लेने. ठीक है. वी डोंट नीड टू मच ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द यूजर्स. Sure, मतलब sir. वो हो जाएंगे. हाँ? ठीक है. Sure, sir. नेक्स्ट अंजना, यू कैन शेयर योर स्क्रीन. अंजना, you can share your screen. Anjana, can you hear me? I think there's some issue. Okay, no worries. We can switch to Akshay. Yes, sir. Is my screen visible? Yeah, yeah.
How often do you hire maid of unique services? Scroll. How do you currently find maid that you know about the phone level? Take care. What are the most important factors? Okay, good. Scroll. That's okay. Because I'm based on financial first trust. Okay, stability. What factors? Okay. All right. Scroll. Okay. Scroll. This is a good question. The preference of gender and age. It's a good question. How important is it for you to trust? I mean, ये question relevant नहीं था. How important is it for you to trust the maid service? क्योंकि अच्छा maid service provider. Oh, sorry. I read it as trust the maid. ठीक है. Then it's fine. That's fine. Okay. हाँ इसमें ये क्वेश्चन का थोड़ा इसका जो आंसर है ट्वीक कर सकते थे कि how important is it for you to able to communicate directly with the maid or service provider. So इसमें क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था how are you more comfortable with either talking to maid or to the service provider. Yeah. So then we get an input whether should we talk be the mediator or we directly source out the maid's number. Yeah. हाँ ये क्वेश्चन का ट्वीक कर सकते थे. How much you rely on reviews? ठीक है इसलिए do you prefer upfront payment pay after service? Okay. What features will you expect from maid? हाँ ओके इसमें क्लास में अदर भी डाल देना चाहिए तो यूजर अपने हिसाब से लिख सकता है. हाँ नहीं डाला पर हाँ you use any okay ठीक है. Let's look at the responses. Actually, I got only 8 responses. That's fine. Daily, weekly. Okay, we can choices. Scroll. Word of mouth. Okay, scroll. Price and quality of service. Okay, ठीक है. Scroll. What's this? Okay, ठीक है. Scroll. Okay, scroll. Keep scrolling. Okay. Okay. Yes, 50% have. Okay. All right. So अब ये जो इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसका एंड पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा है ना कि वेरी इंपॉर्टेंट क्या है मेड से बात करना है कि सर्विस प्रोवाइडर से बात. ये वाला ना नीचे वाला अब वेरी इंपॉर्टेंट 87 लोगों ने तो बोल दिया पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है मेड से बात करना है कि सर्विस प्रोवाइडर से तो क्लियर है. हाँ do you learn reviews very matter plus scroll पे आपका सर्विस यहाँ पे तो पूरा पे आफ्टर सर्विस है. ये ठीक है. स्क्रॉल which one is not all right cool which yes all right cool. ये मेरा वेबसाइट का डिजाइन का है. मेरे टाइम तो मैंने यही किया था सिर्फ ऊपर वाला. ठीक है. स्क्रॉल ग्रिड हटा देना. हाँ स्क्रॉल नहीं वो करके स्क्रॉल कर बस. कीप स्क्रॉलिंग. स्क्रॉल okay. Keep scrolling. ठीक है. This is good. खाली वो जो questions है we have to make sure
कि क्वेश्चंस के आंसर जब आए तो इट शुड मेक सम सेंस। ठीक है, जैसे वो एक एज वाला अच्छा था, रेफरेंस वाला, जेंडर वाला क्वेश्चन अच्छा था। फिर एक जो आउटकम है, इफ यू हैव टू लुक एट द आउटकम, तो उसमें ट्रस्ट वर्दी रिव्यूज ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब हम ऐप बना रहे हैं तब वी हैव टू मेक श्योर दैट वी बिल्ड आउट दैट ट्रस्ट। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो देखेंगे आगे चल के, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज एन इनपुट फॉर अस। ठीक है, इट्स फॉर एवरीवन, आई मीन एक जनरल फीडबैक बता रहा हूँ। ऑलराइट, अंजना, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Please share your screen. I have made only some simple questions. That's fine, whatever it is, it's fine. Just share it. I don't know, it is creating some problem for sharing it. Okay, ठीक है, no worries. We'll move to Sukesha then. You can send me the link Yeah, to the yeah, sure. send me on chat. I'll have a look. Yeah. Sukesha, you can share your screen. Yes. Is my screen visible? Yes, I can see. Okay, Gmail address. थोड़ा fast. Okay. Email address. Why do you require a house help? ये बहुत broad question हो गया, तो उसमें कुछ options, हाँ मतलब fourth और fifth question same ही है. Basically, you could have avoid the fourth question क्योंकि उसका आंसर fifth में मिल ही रहा है ना. Right. Okay. हाँ, so fourth वाला avoid कर सकते हैं. How frequently is fine scroll. What is the desired start time for the house help? Okay, ये अच्छा question है. The timing for the house help. Preferred duration. Okay, ठीक है. Would you like the house help to perform additional tasks such as make the okay, ठीक है. Now अपन additional tasks. Approximate size of the property that. ये again थोड़ा ये सब्जेक्टिव है. आई मीन डजंट मैटर स्मॉल मीडियम या लार्ज हो, a service is a service. So 11th question we could have ignored. Okay. Materials, flat rates, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है. Do you prefer to pay in cash, online, bank transfer? Okay, how important. इसमें जो अभी शायद अक्षय ने शेयर किया था उसमें एक क्वेश्चन था कि how do you prefer paying upfront या after the service? तो वो भी एक अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. जस्ट एडिंग टू योर क्वेश्चन 13, क्योंकि इमेजिन इफ वी आस्क फॉर द पेमेंट अपफ्रंट एंड दे आर नॉट यूज्ड टू इट, करेक्ट. उनका बिहेवियर नहीं है काम करे बिना ही हमको रुपए दे दे. तो वी हैव टू देन मेक श्योर एट आवर एंड एज टू हाउ डू वी केटर दैट प्रॉब्लम, कि हम बाद में कैसे हमसे. ठीक है, हाउ इम्पोर्टेंट फंक्शन ये सब कोई अभी कोई भी नहीं बोलेगा ना आप लेट आओ चलेगा मुझे. So 14th question, it's right, relevant. Do you prioritize cost versus quality? Equally important. I mean, highest I'm sure third वाले पे आएंगे results पे answer. Where do you prefer to hire? Okay, ठीक है. Supplies and equipment. Okay. 19 भी relevant नहीं है. Okay. 20th is not relevant. ठीक है, let's look at the answers. Yes, quickly scroll. Demographics नहीं चाहिए. We can scroll. We can scroll down. Okay. हाँ, एक मिनट. Whatever. Okay. How frequently? Frequently में क्या है? Weekly. Monthly. Yes. Okay.
twice or thrice a week and monthly ज़्यादा preferred है, and with that weekly. Morning में highest है, graduation 1 hour highest है, 2 hours. Okay. ठीक है. Scroll. Twice a week. ठीक है. Okay. All right. Okay. Okay. As I said, 18 post cost and equality are equally. Okay. ठीक है. Scroll. Okay. Scroll. ठीक है. Alright. So अच्छे थे कुछ questions relevant नहीं थे, but again a very good start. I would say very good start. At least you guys are thinking about it, you know, so which is very good thing. ठीक है. Scroll. So here's the website. आपने आर्टबोर्ड नहीं बनाया, ऐसे ही बनाया है? अच्छा, आपने अलग अलग फ्रेम बना लिया है, अलग अलग हाँ. आर्टबोर्ड नहीं बना, एक ही आर्टबोर्ड को एक्सटेंड करके उसमें ही बनाना था. Okay. I thought I guess desktop बनाने से. हाँ, नहीं, एक ही बना. ठीक है. स्क्रॉल. स्क्रॉल. ठीक है. Again, fair start. So with this activity, I'm sure बहुतों को थोड़ा फिग्मा पे ग्रिप आ रहा होगा कि इंस्टाग्राम का भी थोड़ा बनाया था, चला ये. हाँ, बताओ. तो बेटा खाली यूज कंट्रोल माइनस और नैप हो जाएगा. So here this is the photo, the screenshot of it, and the left one is where I created it all. Okay, nice. आइकन्स वगैरह कहाँ से लिए? Iconify से प्लगइन से. ये नीचे वाले. ओके, इससे ही एक्सट्रैक्ट किए हैं क्या? हाँ. इस स्क्रीनशॉट से एक्सट्रैक्ट किया. ओके. ठीक है. अभी if you just go back again to the Instagram then, so I'll tell you that the reason why we copy in the initial days. उसका मैं एक example बता. So Pratham, be ready with your presentation. The next is yours. सर, तो वो इंस्टाग्राम का प्रेजेंट करूँ मैं फिर से? हाँ, करो. ओके, एक सेकंड. So now this would be a very interesting part for everyone in the lecture. So if you see very small minute details, okay, the very first thing is the spacing of the content which says T Colin Campbell Center. Okay, वो जो पूरी line है, if you see the left का spacing, correct, in the screenshot, and the arrow button on the top, the left arrow on the top, तो वो दोनों का alignment if you see, तो जो लेफ्ट में जो बना है अलाइनमेंट पूरा ऑफ है. राइट. हाँ. फिर इफ यू सी पोस्ट फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग, उसका अलाइनमेंट पूरा ऑफ है. इट इज नॉट इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, है ना, वो जो ऊपर है ना, पोस्ट फॉलोअर्स और फॉलोइंग. हाँ, राइट. होता है. हाँ, वो अलाइनमेंट ऑफ है. फिर लेफ्ट में जो पैडिंग है, आई मीन जो स्पेस छोड़ी है कंटेंट के बीच में लेफ्ट साइड पे,
एंड जो नीचे बटन है व्यू शॉप फॉलोइंग उसके लेफ्ट में, हम्म, तो टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में जगह कम छोड़िए, वेयर बटन के लेफ्ट साइड में जगह ज्यादा छोड़िए. Whereas if you see the हाँ, screenshot, everything is aligned properly in the same spacing left में, right. हम्म, है ना? So these are the small details, minute details that every one of us have to take care while designing. okay. Even the size of the buttons, if you see, correct? So the height हाँ, of the button is too much in the design जो आपने बनाया है, whereas in the screenshot is smaller, right, right. है ना? So ये सारी minute हाँ, details को ध्यान रख के improvise. मैं नहीं बोल रहा हूँ पहले okay, दिन से ही हो जाएगा अच्छा, बट दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर. okay. ठीक है ना? ठीक है. सो नेक्स्ट, ठीक है. सो नेक्स्ट एक काम करेंगे, हम एक 10 मिनट की छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, 9 बजे 9 से 9:10 तक. नाउ एवरी वन ऑफ यू ऑल, ठीक है, हम वापस से शेयरिंग पे भी आएंगे. ठीक है, 10 मिनट्स एवरी वन ऑफ यू ऑल, व्हाट यू हैव टू डू. अब जितने भी हमारे एंड कस्टमर्स होंगे फॉर द ऐप, सो जैसे हमने इसमें पर्सोना में देखा, एक हाउस मेकर थे, फिर स्टूडेंट्स थे कुछ, और कुछ थे वर्किंग प्रोफेशनल. सो वैसे लिस्ट डाउन कौन से टाइप ऑफ लोग हमारे ऐप यूज करेंगे, उनका एक बेसिक डेमोग्राफिक बनाओ, उनका नेम, एज, लोकेशन आपके हिसाब से. ठीक है, एंड उसको एक छोटा सा बैकग्राउंड लिखो कि मान लो प्रथम है. सो प्रथम, is a working professional. He is living alone in Mumbai. His parents stay at, say, Rajasthan. So he is here staying alone. So he needs a house help, say twice a week, all right? Because rest of the time there's no one at home. So for that he needs only twice a week. So इसका background हो गया. अब ये करने के लिए what are the goals that, ठीक है, इतना करो. कल गोल्स और फ्रस्ट्रेशन पे मैं बाद में आता हूँ. फर्स्ट थिंग, लिस्ट ऑल द पीपल जो ये ऐप को यूज करेंगे. सेकंड, वो जितना भी लिस्ट करोगे हर एक का आपको पर्सोना बनाना है, उसका डेमोग्राफिक्स और उसका बैकग्राउंड. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 9:05 हुई है, 9:03, आई टेक इट एज 9:05. 9:15 तक यू गाइस हैव टाइम. ठीक है, 9:15. सो आपको फिग्मा में ही एक आर्टबोर्ड बना के उस पर लिस्ट कर लो, और उसके आगे हर एक का ये लिख लेना. यू कैन यूज चैट जीपीटी ओपनली, आई एम सेइंग इट. ठीक है, लेकिन नॉट नाउ, नॉट नाउ. आई टेल यू व्हेन. अभी सबसे पहले खुद के हिसाब से लिस्ट करो, खुद के हिसाब से उनका डेमोग्राफिक्स बनाओ. बैकग्राउंड के लिए वी विल यूज द एआई, बट नॉट नाउ. पहले इतना बना दो डेमोग्राफिक्स. ठीक सर है, डेमोग्राफिक्स एज इन क्या क्या मतलब, समझा नहीं. नेम, एज, ठीक है, नेम, एज, लोकेशन, ओके ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन और क्या डेजिग्नेशन. ओके ठीक है. ठीक है, हाँ. 10 मिनट्स है, 9:15 तक. आई विल आल्सो बी बैक इन 10 मिनट्स. यही है, मतलब मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ. सर जितने भी रिस्पॉन्सेज आए सबका वो लेना है, सबको लिस्ट डाउन करना है. नो 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 नो, यू विल गेट यूनिक पर्सोनास. जैसे मैंने बोला ना, एक हो सकता है स्टूडेंट, एक हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल, एक हो सकता है हाउसवाइफ, है ओके. ना? तो ओनली हाँ. द यूनिक वंस. ओके ओके ऑलराइट ऑलराइट.
Name, age, occupation, location. Designation. All right. So I have received one from Bhavika. So one is housewife, second is profession, working at MNC, full-time traveler. Uh, all right. So I just read out. So housewife, of course, by default needs, for entire house because she has two babies and she is very busy with them. So she wants someone who can take care of the house. ठीक है. Second is खाली इसमें एक problem है. Age लिखा है 27 years and it said two babies. So I'm not sure that nowadays, someone with 27-year-old has two babies. Just, अच्छा, she is saying they are twins. All right, फिर हो सकता है. Agree. And then she definitely, needs that. So don't need to share it on the WhatsApp. ये तो जो स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते खाली वो शेयर कर रहे हैं. I'll ask everyone. So she is traveling, so उन्होंने बुक में लिख के भेजा है मुझे. I'm just reading it out. Second is Smriti Irani, 32 years old, married. She is working in an MNC company. Working woman like 95 can't manage housework. Doesn't need a cook maid. Otherwise, need whole house. Okay, ठीक है. Shraddha, she is 29 years old, not married. She's a full-time traveler. She needs a full-time maid who can take care of her parents too and do all the household work including cooking. All right. इसमें एक और ऐड कर सकते हैं which is little aged, say around 50 years. Uh, कि इसको फोन यूज करना तो आता है but she is not aware कि how do I find a maid. Yeah. So yes. ठीक है. So moving ahead, I would request Pratham to share his screen and take us through. So through the form or through this persona? Everything. Everything. Okay. Just a minute. Is my screen visible? It's loading. Yes. Now. Yeah. So these are the this is the form which I made. Okay. Take a scroll. Scroll. ठीक है.
Done. Okay. Scroll. Okay, scroll. Okay. Keep scrolling. थोड़ा हाँ. Okay. सब ये वाला क्वेश्चन जो है कोई अगर यूज ही नहीं कर रहा है मेड सर्विस ऐप तो हाँ इसके लिए रेलेवेंट ही नहीं है ना. ये वाला, बट सर अगर उनको चाहिए कि भाई मेरे को अगर कोई बना रहा है तो कौन सा फीचर उन लोग को सबसे अच्छा लगेगा, तो वो भी तो है ना। तो वो क्वेश्चन फिर अलग से फॉर्म है, नॉट अच्छा दिस. ये क्वेश्चन ठीक है, दिस इज रेलेवेंट. लॉयल्टी पॉइंट वाला भी एक अच्छा पॉइंट है. If there was a teacher, again, too specific for the user. If you ask users what they want, ये Henry Ford ने बोला था, if you remember, that if you ask users what they want, they'll say faster horses. So don't be so direct to them, वरना वो आप जो बोलोगे बोलना चाह रहे वही वो रिपीट करेंगे बस. ओके Again, ये वाला जो मैंने बोला ना, यस यस सेम थिंग, it's too, you know, डायरेक्ट टू आस्क। ठीक है. ये सब स्क्रोल स्क्रोल. तो ये ना ज्यादातर एक यूआई यूएक्स पर्सपेक्टिव से पूछा है. हाँ हाँ, वो नहीं करना है हमको, यूजर के पर्सपेक्टिव से उसका माइंडसेट जानना है ना. ठीक रिस्पॉन्स, शुड आई ओपन द रिस्पॉन्सेस? है. Should I keep scrolling? Yeah. Graphs are easier to understand. Okay. 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 ठीक है. अब keep scrolling. ठीक है. ठीक. अभी And, फिग्मा। हाँ, we can go through the personas. Yeah. So these are the personas that I thought of. Housewife, single people क्या होता Bachelors. है? तो single people क्या होता Sorry. है? Elderly. So जो terminologies है, what you have to use is student, housewife, working professional जो single people है वो. Uh, Elderly की जगह it can be uh, a senior citizen rather. Yeah. ठीक है. Family on a vacation. सर गुड यूज केस, और उसका टर्म शायद कुछ अच्छा दे सकता है, बट ठीक है. हाँ, वो भी एक यूज केस अच्छा है कि अगर कोई अपने फार्म हाउस में जा रहा है तो उनको ऑब्जर्व चाहिए. ठीक. and this is the pitch.com which I made design. हाँ, क्विकली स्क्रोलिंग. This is a screenshot. हाँ, दैट्स फाइन. एक्सप्लेन मत करो, जस्ट क्विकली स्क्रोल. अभी तक इतना ही बना है सर. ओके, ठीक है, नो वरीज. बट This फेयर also. पॉइंट. व्हाट यू हैव टू टेक केयर इज कि खुद के बारे में मत सोचो, डिजाइनर के बारे में सोचो. थिंक अबाउट यूजर्स, है ना. Okay, कम sir. योर डिजाइन हैट. ठीक है. Yes, sir.
ठीक है, नेक्स्ट स्तुति. I'll share the screen. Yeah. Is it visible? Yes. Okay. It is good. एक ये सॉरी टू कट यू, सॉरी टू जस्ट वही होल्ड करना. अंजना ने मुझे अपना ये भेजा था, क्वेश्चन है उसमें. एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा. आई जस्ट रीड दैट क्वेश्चन. हाँ, डज योर मेड यूज स्मार्टफोन? So it's a very important question for us to know, है ना? Because we don't know yet, it's a gray area. So it's a good question to know, from the users directly कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, कि आपकी मेड स्मार्टफोन यूज करती है कि नहीं करती है. इट्स अ गुड क्वेश्चन. एंड दूसरा क्वेश्चन अच्छा लगा, हाउ ऑफन डज योर मेड टेक हॉलीडेज, है ना? सो ये दो क्वेश्चन आई रियली लाइक, जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो दिस इज फॉर एवरीवन. So let's look at this one again. So what was the second question? What does your maid? How often does your maid take holidays? Okay. Okay. So जब डिसाइडिंग फैक्टर होगा तो लिस्ट में हम वो भी बता सकते हैं, है ना? That this is so and so maid and she probably takes 2 holidays in a month or 1 holiday in a month. वैसा. So that can be one of the deciding factor. Okay, how many hours per year? ठीक है, scroll. ठीक है. Scroll, scroll. So अब ये भी अगेन irrelevant क्वेश्चन है. What level of cleanliness? कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा घर गंदा हो. So highest high cleanliness and organization standard ही आएगा. If we know कि ये आना है, so don't put that question, है ना? It's irrelevant. ये क्वेश्चन थोड़ा स्केप्टिकल हो सकता है, थोड़ा डाइसी हो सकता है, बट आई अग्री कुछ लोग वो देख के भी हायर करते हैं. Cultural and religious considerations. I agree. Importance, punctuality, and ये again irrelevant question. No one, wants कि मेरे घर पे maid late आए. Irrelevant. Would you prefer a live-in maid or someone who comes in? Oh, अच्छा, that way, मतलब live-in maid क्या होता है? ठीक है. It's called as a full-time maid, not a live-in maid. Yeah. Specific personality traits. ठीक है. ओके. बजट, ये अगेन थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया बजट वाला. यहाँ पर जस्ट गिव रेंज, है ना? Okay. व्हाट इज लो बजट फॉर समवन हु इज अर्निंग से 10,000, उसके लिए लो बजट 500 हो सकता है. फॉर समवन हु इज अर्निंग से 1 लाख, उसके लिए लो बजट 1000 2000 भी हो सकता है. तो गिव अ रेंज. Okay. ये अच्छा क्वेश्चन है. हाउ ऑफन डू यू प्रेफर टू कम्युनिकेट विद योर मेट रिगार्डिंग शेड्यूलिंग टास्क एंड एनी इश्यूज? ठीक है, दिस इज गुड. ठीक है, ये अगेन नॉट रेलेवेंट. ये सिक्योरिटी कंसर्न सबको ही होगा ना. तो फिर Should I say the responses now? let's look at the responses. Okay, scroll. Okay, so now ये एक question, if you see how often do you change your maid, so yearly है ये.
अंजना ने भी क्वेश्चन डाला था, बट नाउ सिंस आई एम लुकिंग एट द रिस्पॉन्सिव इट मेक्स मोर सेंस कि एक बार अगर मैंने मेड सर्विस ले ली, so then they probably won't look back at us कि मैं वापस सर्विस क्यों लूं, या अब मेरा काम नहीं है उस ऐप पे, तो they'll probably uninstall it, या अगर उनको कभी कोई और हेल्प चाहिए तो they'll probably install it again, या फिर वेबसाइट यूज करेंगे वापस, है ना। हाँ, So, ये एक पॉइंट बस अब याद रखना, विल probably do something about this point later. ठीक है, स्क्रॉल थोड़ा फास्ट स्क्रॉल करना। ओके ओके मेल comes in for specific hours को IS को, ठीक है। मॉडरेट बजट है, ठीक है। स्क्रॉल 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 ठीक है, डन डन। किसी ने भी वो स्मार्टफोन वाला क्वेश्चन डाला था, एंड हैव वी गॉट एनी रिस्पॉन्सेस फॉर दैट? अभी 3 बचे हैं जिन्होंने हैंड रेज किया था, आदित्य, सुप्रिया, निशी। ठीक है, सो सुजी दिस इज गुड। जैसे मैंने जो छोटे बहुत जो फीडबैक्स दिए हैं, राइट, जस्ट मेक श्योर कि उसको थोड़ा हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें फॉर आवर नेक्स्ट असाइनमेंट, है ना। दैट Yes, डोंट कीप क्वेश्चंस ओपन एंडेड जिसका हमका कुछ फायदा, हमारे पास कोई फायदा ही ना हो, है ना। हाँ, ऑलवेज मेक रेलेवेंट चॉइसेस, yes, ठीक है। पर्सोना देख लेते हैं एक बार। yes. स्मिता 73-year-old retired teacher, oh was a main very good 20-year-old PG student, okay okay ठीक है। 35-year-old, ये अच्छा यूज केस है कि उसको बस 1 महीने के लिए चाहिए भाविन को, बिकॉज उसकी नी सर्जरी हुई है, सो ही वांट समवन टू हेल्प, सो दिस इज अगेन अ गुड यूज केस, वेरी गुड। सिंगल डैड, बैंगलोर, ठीक है, चलो दिस इज फाइन। सो इफ वी सबमिट अप जो भाविका ने भेजा, जो प्रथम ने बताया और ये जो बताया, वी आर मोस्टली इन सिमिलर लाइन्स, ठीक है, cool, nice. So we'll move to the next, Supriya. So मैं जो भी फीडबैक्स दे रहा हूँ, इट इज फॉर एवरीवन, सो दैट कोई भी ये मिस्टेक ना करे। इसलिए जो पूरा ना लेक्चर है वो लाइव लेक्चर इसलिए ही है, सो दैट वी लर्न फ्रॉम एवरीवन्स मिस्टेक। अगर मैं इंडिविजुअली सबको पर्सनली फीडबैक देता तो आपको शायद वो समझ में ना आए, राइट। ठीक है, सुप्रिया, यू कैन शेयर स्क्रीन। सुप्रिया, सुप्रिया, कैन यू हियर मी? आई थिंक कुछ इशू है, ठीक है। निशी, यू कैन शेयर स्क्रीन। Okay, sir. सो अगर हाँ विजिबल है, सो अगर रिस्पॉन्सेज है तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज पे ही विल जाऊं।
तो उसमें क्या क्वेश्चन और आंसर्स हम दोनों देख सकते हैं. So my screen is visible. हाँ, screen is visible. I am saying that if you have the responses, open up the responses. अभी तो मेरे पास जो है वो ये आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ responses नहीं है क्या? नहीं अभी ठीक है, no worries. फिर हम क्वेश्चंस देख लेंगे. What challenges you faced? Okay, biggest concern. What were the things selected made by house? What type of cleaning services? ये सब जो क्वेश्चंस है, राइट, इसमें ऑप्शंस देंगे ना तो ज्यादा रेलेवेंट आंसर आएंगे. अभी ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस है. यस. तो लोग बड़ी बड़ी कथा भी लिख सकते हैं, कोई एक वर्ड में भी आंसर दे सकता है ना. सो डोंट कीप इट सो ओपन एंडेड. जो ब्रैकेट में लिखा है उसको ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाल सकते हो. ओके. हाँ. स्क्रॉल. ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ही है. नहीं, दैट्स फाइन. ठीक है फाइन. एंड पर्सोनास, ये उसके आंसर है जो सबको मैंने भेजे हैं. अच्छा आए थे क्या? हाँ. ठीक है. आई थिंक लेकिन ये मोर और लेस सिमिलर ही होंगे जो बाकी के हमने देखे, बिकॉज क्वेश्चंस भी सिमिलर ही है. ओके. है ना. सो वी कैन मूव टू द पर्सोनास. ओके. अभी जो पर्सोना बनाने थे ना हमको, हाँ हाँ. पर्सोना, हाँ, वो शेयर करना. ओके. सो मैंने सिर्फ लिस्ट बनाया है, दूसरा कुछ ऐड नहीं कर पाई मैं. ठीक है. हाउस वाइफ, वर्किंग क्या, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनली जो वर्क करते हैं, जॉब वगैरह. स्टूडेंट्स, ओल्ड एज, people with disabilities. Good point. Events. हाँ, event is again. Event ठीक है, ओकेशन हो गया, बट वो यूज कौन करेगा? हमको पर्सोना लिखना है उसका, है ना. So ओके. it can be a mother, it can be maybe a person जिसके घर पे हाउस वार्मिंग पार्टी हुई है. हाँ हाँ. लेकिन उसको चाहिए कोई हेल्पर टू क्लीन इट अप. ओके. रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए चाहिए, लेकिन वो बुक कौन करेगा? इवेंट्स के लिए चाहिए, लेकिन बुक कौन करेगा? है ना. यस. हाँ. जॉब्स लाइक हेयर कटिंग, क्लासेस, अगेन कहाँ चाहिए वो इसमें आ जाएगा आपके बायोग्राफी में. ओके. पर उसको बुक कौन करेगा हमको वो मेंशन करना है. सो पर्सोना में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इज द पर्सन हु इज गोइंग टू यूज द प्लेटफॉर्म, ओके. वेबसाइट, वेदर इट इज मोबाइल. क्या यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, वो सेकेंडरी है. क्लियर है. यस कौन सर. यूज करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. यस सर. कूल. ये आई थिंक मैंने देख लिया था लास्ट टाइम, हाँ बट वो एक आर्टबोर्ड में कर दिया है ना. हाँ. ठीक है. और इंस्टाग्राम का किया है? नहीं वो बाकी. ठीक है, ठीक है. Okay. ऑलराइट, नो वरीज. ठीक है. थैंक यू निशी. Thank you. सुप्रिया, यू देयर? आपको सुनाई दे रहा है? सो वी कैन कंटिन्यू विद योर नेम. Hello. हाँ, हाय सुप्रिया. सो Hello, इफ sir. यू कैन शेयर स्क्रीन एंड प्रेजेंट इट टू अस. Yes. सो जब हम क्लाइंट से भी बात करेंगे, सो इतने ही लंबे डिस्कशंस चलेंगे क्लाइंट के साथ भी. ठीक है. क्योंकि क्लाइंट भी अपने ही पूरी कथा सुनाएगा, क्लाइंट अपने बारे में बोलेगा, बिजनेस के बारे में बोलेगा. शायद हो सकता है एक मीटिंग में इतनी ना हो, बट ऑन एन एवरेज इतना टाइम जाता ही है. ठीक है. कि जब आप बिजनेस समझते हो, जब आप यूजर समझते हो, आप जब कोई रिसर्च करते हो, आपको क्लाइंट को कन्वे करते हो, सो 1-1.5 घंटा आराम से मोटा मोटा जाता ही है. ठीक है. सो टेक इट एज अ फीडबैक, टेक इट एज अ लाइव लर्निंग, कि अगर आप जॉब भी करते हैं तो भी यही होने वाला है. ठीक है. डोंट टेक इट एज कि बाकी लोग शेयर कर रहे हैं तो मेरा काम हो गया, नहीं. सो बी वेरी पर्टिकुलर एंड बी फोकस्ड कि किसको क्या फीडबैक मिल रहा है, सो दैट यू डोंट मेक दैट सेम मिस्टेक. ठीक है. हाँ सुप्रिया, वी कैन सी द स्क्रीन, यू कैन शेयर द क्वेश्चंस. Okay, sir. Sir, I haven't made multiple choice question, but मैंने इस टाइप से बनाया check boxes टाइप का. और वो रिस्पॉन्सेज पे ही क्लिक कर दो. Okay.
responses. Some Responses, हाँ अब ठीक है. हाँ, so क्या इसके आंसर उसके साथ में देख सकते हैं. Please add So some points if you think. बेसिकली मैंने मतलब अपने जो पॉइंट्स है मुझे जो मेजर लगे मतलब डिस्कस कर भी तो मैंने इसमें डाल दिए मतलब और मैंने साथ में ऐड किया. अगर आपको इनमें से कोई वैलिड लगता है तो आप चेक कर दें. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सर एक्चुअली मैं हेलो हाँ, सुनाई दे रहा है. इसमें क्वेश्चन क्या है? सर मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं मैंने डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं किया है. सो बेसिकली मैंने डायरेक्टली डाला कि वी आर मेकिंग एन ऐप. सो एक सर्वे है. सो मैंने अपने क्वेश्चंस डाले हैं और प्लस उसमें डाला है कि आपको जो इनमें से वैलिड लगता है और आपको लगता है कि कुछ ऐड करने वाले पॉइंट्स हैं तो आप मतलब वन वर्ड ब्रीफ में भी ऐड कर सकते हैं. सो मैंने इस टाइप से बनाया है बिकॉज एवरीवन वाज नॉट अवेलेबल तो मुझे ये ज्यादा बेटर लगा. नहीं. सो अब एक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक, ठीक है. हम्म जब हम कोई सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्वे का आउटकम हमको क्या चाहिए? सबसे पहले वी वांट टू अंडरस्टैंड यूजर्स बिहेवियर. पहली चीज, वी वांट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूजर्स. ठीक है. वी वांट टू अंडरस्टैंड देयर कॉग्निटिव लोड, कि भाई उनको ऑलरेडी क्या पता है. आर दे अवेयर अबाउट सच एप्स, आर दे नॉट अवेयर अबाउट सच एप्स. अभी करंटली उनका फ्लो कैसा है, वो माउथ पब्लिसिटी से या वर्ड ऑफ माउथ से वो हायर कर रहे हैं. ऑल ऑफ दोज इनपुट्स इज व्हाट वी नीड. ये जो है लिस्ट, इट डजंट हेल्प मी इन एनी विच वे, है ना. ये मुझे कोई भी एंगल से हेल्प नहीं करेगी मेरे ऐप बनाने में. सबको पिकनिक सर्विस चाहिए, सबको बजट फ्रेंडली चाहिए, सबको चाहिए कि कोई भी जो मेड अ गुड बिहेवियर ही हो. एवरीवन वांट्स फ्लेक्सिबिलिटी. सो ये सबको टिक 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 आने ही वाला है. सबको चाहिए पंचुअल हो ही हो. तो जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डोंट गिव ऑब्वियस चॉइसेस. लोग वही सिलेक्ट करेंगे ना, तो फिर अपने रिजल्ट का कुछ फायदा ही नहीं है. ओके सर. सर्वे का, सो सर्वे का आउटकम ऐसा आना चाहिए दैट वी अंडरस्टैंड द यूजर. सो ऑलवेज, इसलिए यू हैव टू फॉर्म द क्वेश्चंस इन अ वे. ओके सर. ठीक है. सो आप इसको वापस करके मुझे पर्सनली भेजिएगा, सुप्रिया, ओके सर. है ना. फॉर्म प्रॉपर क्वेश्चंस, भले रिस्पांस नहीं आए दैट इज फाइन, बट फॉर्म प्रॉपर क्वेश्चंस एंड डू सेंड इट बैक टू मी बाय टुमारो. ओके सर. ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करना. ओके सर. हाँ. और पर्सन आपने किया है? यस सर. ये नहीं पर्सोना. हाँ, ठीक है. पीपल अबाव एज 50, children, single mother, okay, bachelor अंजलि, ओके, ठीक है, दिस इज फाइन. ओके सर. तो अब याद से मुझे क्वेश्चनर वापस भेजेंगे, ओके सर. क्वेश्चंस फॉर्म करके. ठीक है. Yes. सीधा नेक्स्ट यू कैन शेयर योर स्क्रीन. हर्षिता, कैन यू हियर मी हर्षिता? We can't hear you. If you are speaking something, we can't hear you, Harshita. ठीक है. I think you can figure out that क्या issue है. In the meantime, Rohan, you have something to say? Sir, I have the personas ready. Oh, So- perfect. Please share. हाँ, हर्षिता ने शेयर कर दिया. Just hold on, ना रोहन. Sure, sir. हाँ, responses पे चले जाते हैं. So we can see the question answer together. हाँ, name ठीक है. You can skip. Name नहीं लेंगे. Scroll. Contact number भी नहीं, ठीक है. Where did you stay? ठीक है. अभी एक मिनट.
अभी जैसे इसमें आंसर है ना होम, करेक्ट. सो अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल. फर्स्ट सबको इस पे काम करना है ऑन द ग्रामर. ओके, वेयर डिड यू स्टे, नहीं, वेयर डू यू स्टे होता है ना. else you have to be precise in a particular way. Please name your location या फिर what is the location where do you stay, हाँ वैसा कुछ, so that you get proper answers. ठीक है, this is for everyone. ठीक है, स्क्रोल. पहले के दो क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं थे, नाम और वो, बिना नाम के भी हम जान सकते हैं. सो जितना यूजर से कम एफर्ट्स डलवाओगे उतना बेटर है. ठीक है, वो फॉर्म ज्यादा भरेगा. What type of cleaning service you want? Do general cleaning, deep cleaning, laundry. Okay, ठीक है. Scroll. How often do you require service? Daily, weekly. Okay. How many specific preferences? Do you have any specific? Okay. ठीक है. अब इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और फॉर्म बेटर हो सकता है. What is the preferred time for the meal? है ना. सो जो आंसर दे रहे हो या जो भी ऑप्शन दे रहे हो, मेक श्योर कि वो क्वेश्चन से थोड़े रिलेवेंट हो, क्योंकि specific preference for maids availability or timing is not making clear sense. इसलिए are there any special tasks you need the maid to fulfill? ठीक है, scroll. Okay, how many rooms are there in your house that require cleaning? इसको बेटर कर सकते हैं कि what is the approx size of your house? You know, it is one room kitchen, 1 BHK, 2 BHK, 5 BHK, penthouse. वैसे यहाँ पर जैसे रिपीटेटिव आंसर आ गया ना, 1 BHK, 1 BHK, 2 3 4 1. तो थोड़ा वो और प्रिसाइज करना क्वेश्चन. ठीक है. आर देयर एनी स्पेसिफिक एलर्जीज और सेंसिटिविटीज द मेड. ओ, ये मुझे नहीं समझ आया क्वेश्चन. मेड और सेंसिटिविटी एलर्जी से क्या लेने देना है? हर्षिता, इफ यू कैन एक्सप्लेन मी इफ ये क्वेश्चन का क्या मतलब था. हाँ, अगर ये शेफ के लिए होता तो मैं शायद रिलेट कर पाता. मेड के लिए मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ. हर्षिता, वी कांट हियर यू. आप अनम्यूट ही हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है. There's some issue with your mic, I guess. ठीक है, यू कैन लेटर ऑन मैसेज मी या चैट पे डाल देना. डू यू प्रेफर अ मेड हु स्पीक्स अ स्पेसिफिक लैंग्वेज? नो. ठीक है, फाइन, गुड क्वेश्चन. इफ यस देन ये एक ही क्वेश्चन में हो सकता है कि अगर कोई यस करता है तो आप उसमें अदर करवा दो. ठीक है. आर यू ओपन टू हायरिंग अ मेड फॉर अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? मेड भी इन्वेस्टमेंट हो गई है तो ऑफ कोर्स सब लॉन्ग टर्म ही चाहेंगे ना. नो वन वांट्स टू हायर फॉर अ शॉर्ट टर्म अनलेस इट्स फॉर इवेंट बेस्ड, है ना. What is the budget for hiring cleaning services? So, again यहाँ पर आप खुद ऑप्शन दे दो वरना लोग 50 जैसे भी देंगे. पेमेंट. ओके, स्क्रॉल. ओके, ठीक है, गुड एफर्ट्स, बट अगेन जैसे मैंने बोला थोड़ा और रिफाइन करना है इसको, और बेटर करना, एंड पर्सोनास बनाए तो वो भी शेयर करना. ओके, लार्ज फैमिली. अगेन लार्ज फैमिली तो रिक्वायरमेंट हो गया. उस लार्ज फैमिली में से कौन सा बंदा या बंदी ये ऐप यूज करेगा, हमको वो पर्सोना स्पेसिफिक लिखना है. ठीक है. तो सिंगल पेरेंट इज फाइन, वो क्लियर है. खुशी इज स्टूडेंट, दैट इज फाइन. ठीक है. फर्स्ट वाला जो है वो थोड़ा और प्रिसाइज होना चाहिए. इसको क्विकली स्क्रॉल कर दो. ठीक है, यहाँ पर अलाइनमेंट ऊपर इशू है. स्क्रॉल. अगेन एक ही आर्टबोर्ड में सब बनाना है, अलग अलग आर्टबोर्ड में नहीं बनाना है. जैसे आपने डेस्कटॉप 4 3 अलग अलग किया है ना, उसमें वैसे नहीं करना है. स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल.
ठीक है, cool, चलेगा, डन। सो हर्षिता, आपको भी वापस पर्सोनास के जो क्वेश्चन है, सॉरी, ये जो क्वेश्चनर है वो आप वापस रिफाइन करके मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है रोहन, यू कैन शेयर द पर्सोनास। Okay, Shruti Pune, UI designer, student, retired, senior citizen. Scroll. Homemaker, housewife. Okay. Scroll. Okay, that's it. Persona wise makes sense. Persona wise, ठीक है, makes sense. Let me just quickly read out the bios. ऊपर जाना. Okay, Shruti is okay, ठीक है. Architect and student. Okay, ठीक है. Scroll. Okay. सो अब ये जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन का है, इफ ही इज नॉट टेक सेवी पर्सन, ठीक है, सो ही बी द वन हु विल बी यूजिंग द सर्विस, ठीक है, जो शायद मेड को गाइड करेगा कि ये साफ करो, वो साफ करो, ये व्हाटएवर, बट बुकिंग शायद उनके बच्चे करेंगे। ओके। 45, अच्छा, अपर्णा ऊपर 35 की थी, यहाँ पर 45 हो गई बायो में। ओह, नो वरीज, sorry. ह्यूमन एरर। Forgot to change the age. नो नो, दैट्स ह्यूमन एरर। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। सो मोर और लेस आपने जो पर्सोनास बनाए हैं, ठीक है, एक मेक सेंस, सबने सही अप्रोच लिया है। अब इसमें करना क्या है, मैं आप लोगों को एक पर्सोना का सैंपल बता रहा हूँ, ठीक है। एवरीवन हैज टू रिफाइन योर पर्सोनास इन दैट पर्टिकुलर वे। quickly share my screen. ठीक है, सो आई क्विकली share my screen just a second. Okay. हाँ, ये है। Yes.
हाँ, सो हमने यूजर रिसर्च में सर्वेज देखा जहां हमने क्वेश्चंस फॉर्म किए, करेक्ट, एंड देन हमने सबके ये भी लिए रिस्पॉन्सेस। अब इंटरव्यूज कब होता है, ठीक है, जब हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग ऐप हो, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म हो, एग्जिस्टिंग यूजर्स हो, जिससे हम बात करके फीडबैक ले सकते हैं। क्वेश्चंस आप सिमिलर यूज कर सकते हो, वो बहुत ही आप कैजुअल रख सकते हो, बहुत ही आप कैंडिड रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस कि यूजर आपसे बात करने के टाइम चीजें इजीली बता सके कि मुझे ये सर्विस से ये प्रॉब्लम है, अभी ये अच्छा नहीं है, अभी ये बुरा है, नो वॉट एवर। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द यूजर रिसर्च। So surveys, which is forming the questions and getting the feedback in a form of questionnaire or probably interviews. ठीक है। Now general research. अभी this is assignment 1 for everyone. हम जब वापस वेडनेसडे मिलेंगे तब तक आपको करनी है, which is आपको जनरल रिसर्च करनी है कि ऐसे कौन से एग्जिस्टिंग एप्स है, अगर एप्स है तो उनका क्या डेटा एनालिसिस है कि कितने यूजर्स अभी उनका ऐप यूज कर रहे हैं, कितनी मेड्स उनका ऐप यूज कर रही है, व्हाट इज द साइन अप प्रोसेस ऑफ द मेड्स, व्हाट इज द साइन अप प्रोसेस ऑफ द यूजर्स, ठीक है, कितने डाउनलोड्स है, कितने एक्टिव यूजर्स है, जितना भी आपको मिल सकता है डेटा, व्हाट एवर डेटा इज अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट, डू दैट, ठीक है। तो उस दौरान आपको कॉम्पिटिशन्स भी मिलेंगे, ठीक है, कि कंपटीशन में सिमिलर सॉर्ट ऑफ एप्स हो सकते हैं, इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। समवन हैज अ डाउट, नो, हाँ, सब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आज पहला असाइनमेंट है, आपको इसकी पूरी जनरल रिसर्च करनी है। जिसको भी मैंने बोला है कि वापस क्वेश्चनर भेजो, दे ऑल हैव टू सेंड मी बैक द क्वेश्चनर। लेट मी आल्सो हैव अ लुक एट आवर थिंग। ओके, ठीक है, ठीक है। सो एवरीवन विल डू दिस एंड उसमें आप कॉम्पिटिशंस लेके आओगे। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, व्हिच इज ऑन वेडनेसडे। तो ये हम उसमें देखेंगे फैक्टर्स टू कंसीडर वन। और आउटकम जो होगा हमारा रिसर्च का वो ये है, पर्सोनास हमने ऑलरेडी देखा, मैं अभी आपको बताऊंगा हाउ टू रिफाइन द पर्सोनास, दैट इज द सेकंड टास्क। फर्स्ट टास्क डूइंग द जनरल रिसर्च, जो भी एग्जिस्टिंग एप्स है, वेबसाइट है, उसके रिलेटेड डेटा लेना है आपको, ठीक है। सेकेंड जो टास्क है वो है आपको यूजर पर्सोनास प्रॉपरली बनाने हैं, ठीक है। यूजर जर्नी मैप्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंड हम पूरा एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर भी नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द पर्सोनास, हाउ शुड अ पर्सोना लुक लाइक। सो ये एक रेफरेंस पर्सोना है, ठीक है, जहाँ पे हमको एक फोटो वगैरह चाहिए, थोड़ा रेलेवेंट लगना चाहिए, नेम ऑफ द पर्सन, वो क्या करता है, क्या लोकेशन पे है, क्या एज है, ठीक है। एक बायोग्राफी जो आप लोग ने लिखी है, मेक सेंस, गुड वर्क देयर। फिर हमको बताना है कि चैलेंज एंड पेन पॉइंट्स, अभी उसके चैलेंजेस क्या क्या है, लाइफ के चैलेंजेस नहीं, द चैलेंजेस जहाँ पे हमारा ऐप उसको हेल्प करेगा। जैसे मान लो उसका चैलेंज अभी ये है दैट द हाउस गेट्स वेरी डर्टी एंड ही हैज नो टाइम टू क्लीन इट, हिज friends come often to the place and he has to do the dishes all by himself, so which takes a lot of time. So ये सारे challenges हो गए ना, which is why he will come to us, correct. So उसका गोल क्या हो गया, गोल होगा he needs a maid when asked, उसको रेगुलरली नहीं चाहिए, जब वो बुलाए तब आना चाहिए। फिर हो सकता है उसका गोल ये है दैट रोज सुबह आके वो हो घर पे कि वो ना हो, ठीक है, वो मेड आए और
पूरा घर एक बार क्लीन करके चली जाए, ठीक है, दैट कैन बी अ गोल। थर्ड गोल ये हो सकता है कि जब कोई इवेंट हो, उसके घर पे पार्टी हो, तो उसको बुलाए तो वो मेड आ जाए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज कैन बी द गोल। एंड हाउ कैन वी हेल्प? So we can give him, the option where he can book the maid on immediate basis. We can give him the option through the app where he can book the maid for recurring purpose, ठीक है। So वैसे क्या होगा, एक पर्सोना का हमारे पास challenges, उसके क्या goals है, and how can we help with our service, with our app, with our website to this particular persona, ठीक है। एंड जस्ट टू डीप डाइव मोर फॉर दिस पर्सोना, हमको ये दो चीज भी ऐड करनी है कि मान लो ये बिजनेसमैन है, ठीक है, एज 38 है, तो क्या ब्रांड्स यूज करता होगा और क्या एप्स यूज करता होगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि इस यूजर का कॉग्निटिव लोड क्या है, इस यूजर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये यूजर क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। सो ये हमको पर्सोना बनाना है। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। यही लेआउट यूज करना है आपको, ठीक है। नो नो, आपको रेलेवेंट टू मेड ऐप ही करना है, जो भी करना है। ये जो रेफरेंस है ये अलग इसका है, ये ट्रैवल ऐप का है, लेकिन हमको जो बनाना है इट इज ओनली फॉर मेड ऐप ओनली, ठीक है। यार वन यू हैव सम क्वेश्चन? सर अभी जैसे ये ब्रांड्स दैट ही यूजेस, ये वाला जो एरिया हाँ, है, इससे वी आर गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट काइंड, लाइक अंडरस्टैंडिंग कैसा है, और प्लस ये मेड ऐप के लिए रेलेवेंट कैसा होगा। आई टेल यू। सो अभी मान लो कोई, जैसे आपके पर्सोना में एक अपर्णा थी, शी वाज 45 एंड हाउस मेकर थी, है ना। यस। तो हाँ हाँ। वो ब्रांड्स शायद यूज करेगी, से एग्जांपल बोल रहा हूँ, बीबा, ठीक है, वो हम्म डब्ल्यू, हम्म। फीमेल ओरिएंटेड ब्रांड होंगे, नायका, है ना। हाँ हाँ। शी में यूज से स्केचर्स, ठीक है। ओके। सो हमको एक जजमेंट ये आ जाता है उससे कि उसकी लाइकिंग कैसी है ना। इफ ओके। शी वुड हैव यूज्ड, से फॉर एग्जांपल, पर्नियाज, जारा, तो जो उसकी ऐप की जो एक्सेप्टेंस होगी ना, वो उस लेवल से ही होगी, है ना। द ओके। ब्रांड्स यू यूज एंड द एप्स यू यूज आर ऑलवेज समवेयर, सिमिलर। अगर आप इन शॉर्ट्स यूज कर रहे हो न्यूज के लिए, ठीक है, सो दैट मीन्स यू नीड समथिंग वेरी क्विक। आपके पास इकोनॉमिक टाइम्स नहीं होगा, आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप है, आपके पास इकोनॉमिक टाइम्स है, ठीक है, दैट मीन्स यू गो इनटू एवरी डिटेलिंग ऑफ द थिंग्स। आपके पास इंश्योर्स भी हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी वाइस वर्सा। सो विद सर ब्रांड्स ये यू नो सेक्शन द एक मूड बोर्ड साइकोलॉजी ऑफ टाइप का थिंग्स। सॉरी, ये सेक्शन एक मूड बोर्ड टाइप का हो गया मतलब। मूड बोर्ड नहीं है, इससे हम यूजर का साइकोलॉजी समझ रहे हैं। ओके ठीक है। ओके। वी आर अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द यूजर, ऑलराइट ठीक है। है ना। वैसे जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी यही, अगर जो बिजनेसमैन है, ठीक है, ही यूजेस ट्विटर, ठीक है, ही यूजेस लिंक्डइन, लेकिन अगर कोई हाउस मेकर होगा, सो शी मे नॉट बी यूजिंग ट्विटर, शी मे नॉट बी यूजिंग लिंक्डइन, है ना। सो वी नो कि उसका सोशल सर्कल जो है वो नियर एंड डियर वंस ही होगा, करेक्ट। हाँ, वैसे सो हमको बस उसकी साइकोलॉजी समझने के लिए ये दो चीज चाहिए, उस ब्रांड्स और एप्स। ओके सर। किसी ने गिफ्ट कर दिया वो वाले ऐड नहीं करना है यहाँ पे, कि किसी ने जारा का गिफ्ट कर दिया तो वो है नहीं। ब्रांड्स इज समथिंग जो दैट यूजुअली यूज करती होगी, जो जो हाँ, करेक्ट, यूजुअली यूज करती होगी, और करेक्ट। जो और ऐप को इससे तो यूजली जाती होगी। करेक्ट ये भी पता चलता है कि हाउ मच दे आर विलिंग टू स्पेंड लुकिंग एट द ब्रांड्स, है ना। ऑलराइट ऑलराइट। तो अगर कोई बॉबी ब्राउन का काजल यूज कर रहा है, या फिर उसके सामने अगर कोई लैक्मे का यूज कर रहा है, सो यू नो कि हाउ मच दे आर विलिंग टू स्पेंड, करेक्ट। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और एप्स हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड कि वो उनको क्या
आदत है, क्या लेआउट वो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, है ना, कौन से ऐप्स वो रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं, उसका हम कुछ हमारे ऐप में ले सकते हैं क्या इनपुट, वैसे, है ना। ठीक है, ओके सर, ओके सर। सो ये एग्जांपल मैं शेयर कर दूंगा, किसी को कोई डाउट है इसमें, और एवरीवन इज गुड, हमारा पर्सोना सर कैसा दिखना चाहिए। चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स और गोल्स को एक बार फिर से समझा सकते हैं क्या? श्योर। सो चैलेंजेस क्या होगा कि करंटली उसके क्या पेन पॉइंट्स या चैलेंजेस है जो हमारा ऐप सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सो अभी हम ऐप बना रहे हैं मेड फाइंडर का, तो उसके रिलेटेड उसके चैलेंजेस क्या है, जैसे आप किसी ने तो एक वो डाला था कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ही हैज सम नी इंजरी, तो उसका चैलेंजेस क्या है, दैट ही इज नॉट एबल टू मूव अराउंड इन द हाउस, so he needs a maid. He is not able to talk to anyone because he does not know anyone around. ठीक है, वो शायद यहाँ पर माइग्रेट हुआ है काम के लिए ही, so उसके कोई नेबर्स नहीं है, so he does not know where to find a maid. That's the second pain point, where to find the maid, है ना. Okay. He does not know how much to pay to a maid. अब उसको कुछ पता ही नहीं है तो वो कैसे करेगा ना. So these are the pain points. Goal क्या हो गया? To find the maid on immediate basis. To find a क्या बोलते हैं उसको, ऑथेंटिकेटेड बोलते हैं ना, जैसे किसी ने भाई उसके मिलके उसका पूरा वेरीफाइड, हाँ वेरीफाइड इज द वर्ड, वेरिफिकेशन, वेरीफाइड मेड, है ना. डोंट नो द ट्रेंड्स बट एटलीस्ट अ डिसेंट पे, नॉट टू मच ऑफ नो हैसल या टू मच ऑफ टू कॉस्टली नहीं चाहिए. सो ऑल ऑफ दोस कैन बी द गोल्स, एंड हाउ कैन वी हेल्प, इज नथिंग बट आंसरिंग दोस गोल्स एंड पेन पॉइंट्स, कि हम ये करेंगे तो आप ये अचीव कर सकते हैं, हम ये करेंगे तो आप ये अचीव कर सकते हैं, वैसे. ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर सर. किसी और को कोई डाउट्स, एनीवन, नहीं, ठीक है. सो आई विल सेंड दिस कॉपी, आपको ऐसे ही पर्सोना बनाना है. इस पर्सोना की हाइट वेट मैंने 1920 बाय 1080 ली है, सो दैट टेक्स्ट एकोमोडेट करने के लिए थोड़ी स्पेस हो अपने पास. अगर आप इसको 1440 बाय 900 में बनाओगे तो भी चलेगा मुझे, बट कीप इट कंसिस्टेंट, सारे पर्सोना जैसे दिखने चाहिए. सो इफ यू सी दिस, ये वन ऑफ द स्टूडेंट का ही पर्सोना है जिसने बनाया था, ठीक है. सो इफ यू सी एवरीथिंग इज इन द सिमिलर दिस थिंग लेआउट, है ना, ठीक है. सो आई विल सेंड दिस कॉपी, द वन दैट आई हैव मेड, एंड देन बेस्ड ऑन दैट create all set of personas that you think. अगर आपको 5 यूनिक पर्सोना मिल रहे हैं तो 5 यूनिक पर्सोना बनाओ, इट्स ओके. अब इसको थोड़ा अगर रिफाइन करना है ना आपको, पहले आप क्या करना है, आप अपने हिसाब से लिखना सब कुछ, फिर उसको चैट जीपीटी में डाल के सिर्फ उसका ग्रामर वगैरह ठीक कर लेना. पूरा पूरा चैट जीपीटी से मत बनाना. उसका रीजन ये है, बिकॉज मेनी टाइम्स, ठीक है, आप जब क्लाइंट से बात करोगे ना, so this conversation will help you build that trust, this conversation will help you understand the project and the clients even more. इसलिए चैट जीपीटी को रिफाइन के लिए यूज करना, डोंट क्रिएट पर्सोनास एज इट इज फ्रॉम चैट जीपीटी, ठीक है. यूज इट वाइजली, वरना ना पैरासाइट हो जाओगे, क्योंकि अगर बिना चैट जीपीटी के मैं आपको बोलूंगा बनाओ, फिर आप नहीं बना पाओगे, है ना. और दूसरी चीज, जब क्लाइंट्स आपको डायरेक्टली बोलेंगे ना कुछ कि अरे ये पर्सोना भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, यू विल सी कि अरे यार ये तो चैट जीपीटी को सो आप अगेन एज आई सेड कस्टम कर सकने के लिए यूज करोगे वो अलग बात है, बट अभी सब कुछ खुद से करो. ठीक है, हाँ दिस इज डन. ऑलराइट, सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेडनेसडे होगा. And so Maitri, you can share it to me in personal. I'll just look at it, look at your personas and the forms, and I'll give you the feedback.
ठीक है. So next lecture Wednesday होगा same time, and we will go through the personas. We will work on the journey map and we'll work on the information architecture. ठीक है. Just let me have a look at the schedule. Yes. हाँ, ठीक है. Perfect. So as per schedule also हमारा ये फ्राइडे को कोई लेक्चर नहीं है. ठीक है. हाँ, ये फ्राइडे को कोई हमारा लेक्चर नहीं है. So instead what we'll do is we will have a lecture on Thursday. ठीक है. क्योंकि हमारा लास्ट फ्राइडे जो गैप हो गया था, so we will cover that up and हम थर्सडे को एक लेक्चर लेंगे. ठीक है. It won't be a long lecture like today's, but एक छोटा एक क्विक लेक्चर होगा because I want to guide on UX laws and behavioral science. So आप पूरे जो वीक है which is Friday, Saturday, Sunday, alright, Friday, Saturday, Sunday, you have to work on an assignment जो मैं आपको दूंगा, जो इसी के आगे हम बढ़ेंगे. So that's it for today. I will wait. मैंने जिसको भी बोला क्वेश्चन शेयर करने को वापस मुझे जरूर से शेयर करना. Work on the assignment. We'll meet again on Wednesday. Work on the personas, and जिसका हो जाता है persona वो मुझे शेयर भी कर देना, so that in the lecture we can talk about other stuff even more. और जो अगर नहीं भी भेजोगे तो भी ठीक है, वो नहीं बीच में मैं लेक्चर में लेने ही वाला हूँ. Still, okay? That's it. Take care. Sleep tight. Yes. Bye. All right. Thanks, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you. Thank you so much.